तो इंटरैक्टिव का मतलब सभी लोग इसमें बोलेंगे, क्वेश्चंस होंगे, टू एंड फ्रो क्वेश्चंस, पॉइंट्स होंगे, आप लोगों को अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। थोड़ा मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक जन बोलेगा और बाकी लोग सिर्फ सुनेंगे, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप लोग रिस्पॉन्स भी करें। अगर नहीं करेंगे एटलीस्ट जो सोच रहे हैं या जो भी आपका मनोवृत्ति है वो बताएं। तो ऐसा कुछ सेशन होगा, छोटा सेशन होगा, टेंशन मत लीजिए, प्रसाद जल्दी होगा, फ्री हो जाएंगे आप। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So, we on behalf of Self Excellence welcome everyone present offline as well as online for this Thursday Bhagavad Gita class. So, as you all know, and the online devotees they can see on the screen, which is presented that today's shloka is 3.14, right? So, we'll be discussing something from Karma Yoga, this particular verse 14, text number 14. So, have you all read it before? आपने से कोई पढ़ के आया है इसको? At least just to glance. कोई नहीं है? Okay. So we'll start. First we'll read the shloka and translation, word to word meaning. Then we'll recite the Mangalacharan prayers and then we'll begin the class. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवात्. We're reading the word to word meaning. Annat from rains. Bhavanti grow. Bhutani the material bodies. Parajanya from rains. Anna of food grains. Sambhavaha production. Yajna
From the performance of sacrifice. Bhavati becomes possible. Parajanya, rain. Yajna, performance of yajna. Karma, prescribed duties. Samudbhavaha, born of. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. So, translation: all living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. Purport: Srila Baladeva Vidyabhushana, a great commentator on the Bhagavad Gita, writes as follows: Yendriyadi anadatavistam yajnam sarveshwaram vishnubhyacharya tacheshamashnanti tena taddehayatram sampadyanti te santa sarva स्वेरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषय अनादिकाल विवृद्धेर आत्मनुभावा प्रतिबंधक निखिल पापैर्विमुच्यन्ते. The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all demigods, who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Chandra, and Varuna are appointed officers who manage material affairs. And the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lord, are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord, who are in Krishna consciousness, offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections, which are impediments to the progress of self realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action. And this prepares the next body to resemble hogs and dogs. To suffer the resultant reactions of all sins, the material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. Food grains or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food grains and vegetable, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtan Yajna, is prescribed for this age. Must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. We'll start with Mangalashmi. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते वेदान्ताचार्याय विशेषशून्यादिपाश्चात्य नमो महाधन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामाय गौरवतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So
today's verse. In this, Prabhupada has broken it like, if you go on just to see the purport, first Prabhupada explains like what are the basics. He starts with Annad. If you look at the verse, the text says Annad Bhavanti Bhutani. So it's a cycle practically. Like how do we get the, why is the grain important? Grain is important for producing body, right? So how do we get grain now? By the rains. The rains are the main reason why we are getting the grains, right? If there will be no rainfall, we won't be getting. So how is the rain possible? Now coming to this perspective, right? So we are seeing many modern scientists creating artificial clouds and everything, right? Like they are thinking that they can manufacture clouds, there can be artificial rain, and then they can produce the food grains. But here, as per the Vedic knowledge or the Vedic text, what is given here is that for these rains, what we have to perform is yajna, right? Sacrifices. So what are these sacrifices now, right? And in order to perform sacrifices also, what else is required? And then Prabhupada says in the last that yajna karma samudbhava, that these yajnas are born out of karma, one who does the pious deeds, right? So what kind of karmas are they? So Prabhupada, if you look at the purport, Prabhupada is referring to Srila Baladeva Vidyabhushan, one of the great commentators on Bhagavad Gita. And he's telling, the very first statement that he says is that Lord Krishna is the beneficiary of all the sacrifices. That he is the one who is supposed to enjoy each and every sacrifice, right? Not these demigods and everyone else. Then Prabhupada later on, goes on to explain this, how, these demigods serve as the limb of the Lord, right? Let's say there's a tree. So if I'm seeing that one of its branches is drying up, so you won't go up to the branch, climb up the tree and water the branch, right? You won't be doing that. What you will do instead, you will water the root of the tree. And in turn, that water will be given to the branch which requires it, right? So Prabhupada is referring to the same example that how different demigods like Indra, Chandra, Varuna, these all the demigods are appointed officers of the Supreme Personality of Godhead. And what they do, when you perform sacrifices, you give them some part, they get some part which is given by Supreme Lord so that they pleasingly give you rains and everything. If you look at the case of Indra, there's one instance where he gave rain out of, cruelty or in, very envious mood. Can anyone say what was that pastime? Very famous pastime. Yes. Yes, exactly. The Govardhan Hill. So for you all to just, take you all back. Indra wanted to, clear off Vrindavan. So at that point of time, what he wanted was that, he sent the Samantaka clouds to do heavy rainfalls. So उसे हिंदी में बोला जाए तो मूसलाधार बारिश बोलते हैं. मूसलाधार क्यों बोलते हैं? Because it was like pillars, मूसल जैसे. एक पिलर जैसे उसके वाटर ये हो रहे थे, गिर रहे थे. It was that heavy. तो किसी को नीचे ऐसी बारिश मिले, right? So here Prabhupada writes कि वो pleasingly दे, so that they pleasingly give, खुश होकर के दे, right? तो इसमें बताते हैं Prabhupada, later on Prabhupada बताते हैं फिर grains के ऊपर आते हैं कि बारिश होगी तो grains आएंगे, right? बट वो ग्रेन्स भी क्या ऐसे उग गए तो खा लेने चाहिए? नहीं. प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो जो ग्रेन्स है इंटर्न क्या करना चाहिए, हमको लॉर्ड को ऑफर करना चाहिए एंड देन उसको लेना चाहिए. तो कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो हम उसके पीछे क्या देखते हैं, उसके पीछे बेनिफिट क्या है, राइट? कि बेनिफिट क्या मिल रहा है, कि मैं वो करने से होगा क्या. प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं लेटर ऑन कि इससे जो हमारा भौतिक आसक्ति है, मटेरियल कंटामिनेशन, दैट विल बी रिड्यूस्ड प्रैक्टिकली. एंड व्हाट विल इट रिजल्ट इन? डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट? एंड वन हु डज नॉट डू सो, अब ये तो बात होगी जो करता है, चलिए वो भक्ति में आगे बढ़े. जो नहीं करता उसका क्या होगा, उसका जो पाप का घड़ा है, हिज सिंस, द अकाउंट ऑफ हिज सिंस विल बी, it will be filled to the top notch. That is what Prabhupada explains, और फिर प्रभुपाद बोलते हैं later on, let's say हम लोग अन्न की बात कर रहे हैं, but बहुत सारे लोग हैं those who eat meat also, right? They eat meat, fish, non-vegetarians so called. प्रभुपाद बोल रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है. For them also growing of these grains are important, because if they do not grow these grains, how will they eat the animals? Because animal eat grains in order to become healthy, right? If there is no healthy animal, how are you going to eat the animals? So Prabhupada is saying that these grains are also important for them. Now, so that is why we should cultivate grains more, right? So cultivating grain means what? Prabhupada now says that cultivation is important instead of making big factories, which is modern civilization. We will be coming to it. Okay.
Now, this particular thing, these are controlled by the demigods. That is what they are saying. And Prabhupada says, and he says that one who does not perform this sacrifice, what will happen to him? He'll remain in scarcity of these particular, rainfall, food grains. And if you look in foreign countries, there aren't many countries who are producing grains, right? They do not get rains also, they cannot produce grains also. That's why they are importing it, or they are heavily dependent upon meat products. That's why they have frozen meat, eggs, so many, you won't be able to find veg restaurants out. That's the main reason. And Prabhupada says now yajna, performance of yajna comes. तो हम लोग सोचते हैं यूजुअली कि एक बड़ा सा यज्ञ कुंड होगा, उसमें बहुत सारी आहुतियां पड़ेंगी, बहुत सारे क्वालिफाइड ब्राह्मणस बैठ करके मंत्र चैंट करेंगे, बट नहीं. This particular age in Kali Yuga, what is the prescribed यज्ञ? That is हरिनाम, जो हम लोगों ने अभी जस्ट कीर्तन स्टार्ट किया था लेक्चर से कल. दैट हरिनाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ. प्रभुपाद बोलते हैं इस एज के लिए संकीर्तन यज्ञ इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. हर एक युग के लिए अलग होता था, इस युग के लिए संकीर्तन. तो अब आते हैं कि ये जो शिक्षाएं हैं, these teachings, they are applicable where? मॉडर्न सोसाइटी में या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाई जा रही है ये चीजें. एग्री करते हैं आप लोग? कोई भी बोल सकता है. आपको बताया कि यज्ञ करिए या फिर ये आता है, इससे आपका बॉडी नरिश होता है, ये तो चीजें आपको बताई होंगी. बल्कि वाइस वर्सा बताते हैं आज के डेट में कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी निकालते हैं लोग. तो बट वो आपको नरिशमेंट के लिए बताते हैं, बट दे डोंट से दैट you get more protein from veg products than non-veg, right? And less backlashes. So now what we'll be focusing, the first part of this lecture will be focusing upon comparison. आज का हमारा टॉपिक, अगर आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, किसी को पता आज के लेक्चर का? Demoniac education, right? So education, demoniac है कि नहीं वो आप लोग डिसाइड करिएगा. We'll make a comparison, okay? So अगर आप लोगों को पता होगा, दो education is good, but there are types of systems, right? So in India what was prevalent, कोई बता सकता है कि भारतवर्ष में पहले शिक्षा किस रूप में दी जाती थी या किस संस्था में ज्यादा दी जाती थी? गुरुकुल, इंटेलिजेंट, ओके. तो गुरुकुल सिस्टम, राइट? गुरुकुल सिस्टम था, और आज के समय में we are using the modern education system, right? So what is the difference between Gurukula and modern? So now if you look at this aspect, in Gurukula what were we taught? सबसे पहले तो हमको शिक्षा दी जाती थी कि हमें क्या बनना है? We have to become humble. हमको विनम्र बनाया जाता था, सेवा करते थे, सब अपने आप को सबसे छोटा मान करके सेवा करते थे. बट मॉडर्न एजुकेशन जो है हमको क्या सिखाती है? That you have to be on the top of the ladder. आपको सबसे ऊपर रहना है. You have to take pride in whatever you are doing. You have to be first. आपको सबको पीछे छोड़ना है. आपको आगे बढ़ना वो बाद में बताया जाता है. आपको पहले बताया जाता है कि आपको क्लास में नंबर 1 आना है. इसके लिए आपका कंपटीशन क्या है? सो नाउ वी आर एग्जिस्टिंग, राइट? हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सोसाइटी में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. बट व्हाट इज बीइंग थॉट टू अस दैट वी आर द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट? हम अपने आप को सेंटर में रख रहे हैं. तो ये भगवद गीता का एक और श्लोक है, अहम ईश्वराहम भोगी, जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे एक जीवात्मा अपने आप को क्या समझता है? कंट्रोलर समझता है. He wants to take the position of the Lord. हम सब अपने आप को कृष्ण समझने लगते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ ही रिवॉल्व होगा, राइट? तो अब यहाँ ये होता है कि ये तो एक फेज हो गया, बट what in actuality is that this particular society, we are just a module. आप में से जो थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, मॉड्यूल इज एन एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. मॉड्यूल इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बट वो एक पार्ट होता है सिस्टम का. इट इज अ पार्ट, इट इज नॉट द सिस्टम इटसेल्फ. हमको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बताया जा रहा है कि वी आर द सिस्टम इटसेल्फ. लेकिन इन आवर सोसाइटी, आवर कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, व्हाट वी आर थॉट इज दैट वी आर जस्ट अ मॉड्यूल इन दिस बिग सिस्टम. दैट मींस व्हाट, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, सोसाइटीज का नाम दिया क्या होता है? लेट्स से एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट? तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? दैट दे एग्जिस्ट टुगेदर, they operate in cognizance together, right? Cooperative. But the society in which we are in currently is known as competitive society. It's not cooperative society, because we think that if we cooperate, what will happen is that I have to settle down for something less, right?
And how can I settle down for something else? I want to have the best things in the world, the best technology, the best facilities, the best ranks, So this is the ideology on which we are practically growing, right? So because of this, when Prabhupada went to preach, जब वो बाहर गए थे प्रचार करने के लिए in US, so he called, he termed this particular system, बहुत strong term है, he termed it as slaughterhouse. Modern education system is a slaughterhouse. Slaughterhouse जानते हैं ना, तो कसाई खाना बोलते हैं हिंदी में से. तो slaughterhouse क्यों बोला प्रभुपाद ने? कोई गेस कर सकता है क्यों इसका नाम slaughterhouse रखा होगा? मतलब modern civilization, so slaughterhouse क्यों? कुछ और भी बोल सकते हैं ना प्रभुपाद, नर्क बोल सकते थे, it's hell, कुछ भी बोल सकते हो. स्लॉटर हाउस क्यों रखा? एक दूसरे को खाली पीछे छोड़ने, मतलब कि ऐसा है कि मारने तो मार के कैसे भी आगे निकल सकते हैं. But Prabhupada, what he meant was that, it slaughters the opportunity of a conditioned soul to become Krishna conscious. It takes you away from Krishna, right? You are considering yourself as Krishna. So it slaughters that opportunity. When you are in Gurukul, you are more Krishna conscious because you have the attitude of a servant, right? You serve the Guru gives you knowledge, and what is that knowledge? That Ishvara Param Krishna. Krishna is the topmost, he is the supreme controller, he is the one who is to be served, right? So that is what it teaches. So Prabhupada termed this as slaughterhouse practically, right? Now, for that alternative, Prabhupada struggled really hard, he went out and then what he did, this first Gurukul, anyone knows where was the first Gurukul of ISKCON? In Dallas, Texas. So in Dallas, they started this particular Gurukul system therein, And now what happens is, आप में से कोई गुरुकुल गया है? कभी आप लोगों ने visit किया है? It's better like if you all go to Mayapur, that's in Salem, there are like good Gurukuls. So when one goes to the Gurukul, what he sees is that there are small kids, 5 वर्ष की आयु से, मतलब हम लोग जल्दी अपना education they start. And what is in their education? Now we have started including some basic subjects. But usually they have Shastra study hota hai. Then they have, their martial arts training. They are also well trained in everything. Horse riding and, they have cow grazing, cooking, reading of Shastras, performing yajnas. तो मैं कुछ 3 से 4 बार मायापुर जा चुका हूँ. तो देयर वहाँ के गुरुकुल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे. They're really confident. छोटे होते हैं, but they can do things which even if we see, we'll doubt whether we'll be able to do or not. So I used to see them, that they used to lift very heavy pots. वो अपना खुद का cooking करते हैं, right? वो heavy pots उठाएंगे पानी का, और हमारे कमर तक तो pots होते हैं. उनकी हाइट पहले से छोटी है. वो उठा करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. तो उनका bodily strength भी इतना होता है. हमारा तो कमर पकड़ लेगा. इस एज में भी उठाएंगे उतना, तो भी कमर पकड़ लेगा. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब देखते हैं उनको, तो उनको बोलते हैं बच्चों को अभी से क्यों हार्ड वर्क करा रहे हैं. He is meant to play around. बुक्स पढ़े, वो थोड़ा एजुकेटेड हुआ, उसको एंजॉय करने का तो टाइम अभी से इतना काम करा रहे हैं. बट द थिंग इज दैट किड इज हैप्पी. जो कर रहा है बच्चा वो खुश है. आप किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, आप अपने घर में देख लीजिए, आप अपना अनुभव देखिए. आप लोगों का भी कोई पढ़ने बोलता था, आप लोग खुश होते थे क्या? मैं तो पढ़ता था, ये नहीं बोलूंगा खुश होकर के. इंटरेस्ट था मुझको थोड़ा, क्या करूं, कलयुग का जीवूं, थोड़ा इसमें मुझको इंटरेस्ट, पढ़ने में इंटरेस्ट था. कंडीशनिंग है इतने लाइफ टाइम्स का. तो बट कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि मुझको भी पढ़ने का इच्छा नहीं होता था. जैसे आज है, आज मुझको कोई बोल दे कि भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, थोड़ा इच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता, जबरदस्ती बैठना पड़ता. तो ये होता है प्रैक्टिकली कि नहीं होती इच्छा उसकी. बट गुरुकुल में जाएंगे किड्स, उनको बोलना ही नहीं पड़ता. उनके पीछे कोई भी टीचर्स नहीं लगते, या फिर उनके आचार्य नहीं लगेंगे कि नहीं आप जाइए, आप अपना सेवा कीजिए, आप अपना सेवा कीजिए. नहीं, उन लोग ऑटोमेटिकली और खुश हैं उसमें. वो उठा रहे हैं अपनी सब चीजें कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं विदाउट किसी के ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको. बट उनको ये डर नहीं कि मुझे कोई देख रहा है इसीलिए मैं करूँगा. नहीं, बिकॉज दैट इज देयर नेचुरल पोजीशन. गुरुकुल में आपको क्या ट्रेन किया जाता है? टू बिकम दिस सर्वेंट. दैट इज द नेचुरल पोजीशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ लिविंग एंटिटी. हम में से सब लोग प्रयास कर रहे हैं मास्टर बनने का, लेकिन अगर उसको बहुत सटल लेवल पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग है सर्वेंट ही. यदि कोई बोले नहीं मैं किसी को भी सर्व नहीं कर रहा, सब लोग मुझको, लेकिन वो अपने सेंसेस को तो सर्व कर रहा है, अपने इंद्रियों को सर्व कर रहा है. वो एट द एंड स्टेज पे वो बोल सकता है कि चलो मैं सोसाइटी को नहीं सर्व कर रहा, ठीक है, कोई सोसाइटी को नहीं सर्व. मतलब प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू डोंट सर्व गॉड, यू सर्व
डॉग, राइट? फॉरेन में बहुत है, हर घर में होता है, परिवार वाले नहीं होते, कुत्ता जरूर होता है। तो आप देखेंगे तो कुत्ते की सेवा करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। पूरा आधे से ज्यादा सोशल मीडिया आप लोगों का पेट से ही भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे सबसे मोस्ट लाइक्ड, कमेंट, व्यूड एंड उसी का ट्रेंड फॉलो करते हैं लोग। लेकिन एंड स्टेज पे व्यक्ति अगर समझ लिया कुछ भी नहीं कर रहा, अपने इंद्रियों को तो सर्व कर ही रहा है, ही इज सर्विंग द सेंसेस। बट यहाँ पे क्या सिखाया जाता है हमें? टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, to do each and every activity in order to satisfy the supreme personality of Godhead, or Guru, who is the representative of the supreme personality of Godhead. So ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। अब मॉडर्न एजुकेशन में भी क्या कोई बोल सकता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बच्चे? उनको तो फोर्स किया जाता है, इतनी हैवी हैवी बुक्स उठा के लेके जाते हैं आजकल के सिलेबस में। बट आज भी कम हो चुका है, मोस्टली एजुकेशन डिजिटलाइज हो रहा है, राइट? लेकिन चलिए उसके बाद भी छोड़ दीजिए ना, पढ़ने के बाद बच्चा जब ऑफिस जाता है, चलिए वो बड़ा हो जाता है, ऑफिस जाता है, तब तो उसको जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि या तो उसको सोशल स्टेटस मेंटेन करना है या तो उसकी हेल्थ रिक्वायरमेंट है, दो में से एक चीज है। 24/7 कोई डेस्क पे बैठा रहे अगर और उसको बैक पेन, क्रॉनिक बैक पेन हो जाए, क्रॉनिक नेक पेन हो जाए, तो उसको जबरदस्ती एक्सरसाइज करनी पड़ती है। व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट अर्ली, विलिंगली, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोर्स्ड, प्रेस्क्राइब्ड, आपको पे करके एक्सरसाइज करना पड़े। It's better than that. So like these are like some external benefits like of gurukuls which we are kind of watching or we are seeing in today's world, which is lacking. So now one thing is again हम लोग मूवमेंट में हैं, तो मूवमेंट में भी देखते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो हम तो बचपन से गुरुकुल गए नहीं, we have studied in the same system, right? हम सेम सिस्टम में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके बच्चे भी आज भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही ले रहे हैं। बहुत लोग नए हैं, आप लोग तो अगर आप में से कुछ लोगों ने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा होगा, इवन प्रभुपाद वेंट टू दिस क्रिश्चियन स्कूल, राइट, टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन। तो उसका रीजन क्या है? कोई जानता है उसका रीजन क्या है? क्यों लोग, अभी का तो छोड़ दीजिए, पहले भी देखेंगे आप बहुत सारे लोग हैं जो भेजते थे अपने बच्चों को उस संस्था में, क्योंकि लिए उस समय पे फैसिलिटी नहीं थी ना, गुरुकुल तो पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, किसी ने रखा ही नहीं गुरुकुल, तो बच्चों को भेजे तो भेजे कहाँ? बट आज भी अगर कोई सोचता कि नहीं हमारे बच्चे तो जा रहे हैं बाहर, इसमें घर पे आके जप कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइट, इनिशिएशन हो जा रहा है उन लोगों का, लेटर ऑन भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक क्या है? मतलब उसमें बुरा क्या है? भक्ति तो कर ही रहा है ना, वो बाहर जा रहा है, कुछ भी करे वो, वहां एजुकेशन ले रहा है। The biggest problem is that कि उसका जो demoniac mentality है, that is getting cultivated subtly, बहुत सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है। ऐसी चीजें जो हो रही हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल, आप लोग ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, हर एक जन ब्रीथ कर रहा है, बट इतना सटल है कि आप में से कोई फोकस ही नहीं कर रहा उस पर कि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। अभी मैंने बताया तो शायद से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आप लोग ब्रीथ कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली ये इतना ब्रीदिंग इज स्टिल ऑन अ ग्रोसर लेवल, ये और बोलता है ना थोड़ा जड़ लेवल पे है, लेकिन जो ये चेंजेस होते हैं ना माइंड के अंदर, ये बहुत सटल लेवल पे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके माइंड में, क्या इंप्रेशंस बन रहे हैं, आप एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग, और इसको अगर आप एग्जाम्पलीफाई करने जाएंगे, सो कैन जस्ट गिव फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम दिस, ओके। नाउ अभी बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में? लाइक पहले तो हम लोगों के टाइम पे तो मैं डार्विन, मेरे सिलेबस में तो नहीं था वो, या फिर अगर होगा भी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उसके ऊपर। डार्विन, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी आप में से कोई जानता है क्या? बिग बैंग थ्योरी हर्ड, ओके। सो दे से देयर वाज नथिंग बट टू नथिंग्स कोलाइडेड, इट बिकेम समथिंग। कोलिजन हुआ नथिंग में और नथिंग से कुछ तो निकला और फिर उसके बाद में क्या होता है, पहले अर्थ का मास डेवलप होता है, फिर वाटर आता है, फिर ये आता है, ऐसे करते करते कुछ ना कुछ होते होते आज पूरा एक सिविलाइजेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, व्हिच इज ग्रोइंग। सो ये फिलॉसफी उनको दी जाती है, डार्विन्स फिलॉसफी, वेल नोन, wherein he gives even thesis देते हैं या कुछ भी देते हैं, but that's utterly nonsense, no one can believe it कि apes से आए, apes तो apes अभी तक क्यों exist कर रहे हैं, revolution हो रहा है, like if you pass on a certain stage, right, let's say पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे हॉर्स ड्रॉन कैरियेजेस थे, राइट, जो घोड़ा गाड़ी बोलते हैं लोग, हॉर्स ड्रॉन कैरियेजेस, तो वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज के समय में मोटर कार क्यों है? वो तो वहां से डेवलप हुआ ना, हॉर्स ड्रॉन कैरियेजेस से, फिर धीरे-धीरे मोटर कार्स आई, देन बाइक्स आए, देन मोनो रेल्स, रेल्स एंड एवरीथिंग, बट यू डोंट सी नाउ हॉर्स
कैलिएजेस, राइट? वो बस एक लग्जरी के हिसाब से कोई रखता होगा, वरना कोई नहीं रखता. They are practically become extinct. So why isn't this ape species or monkey species becoming exist? Like it's still existing. Why isn't it extinct? No one questions it, right? कोई भी क्वेश्चन नहीं करता. तो ये सारी चीजें क्या की जा रही हैं? This is the input that they have been given, right? So अब इससे होता क्या है? सबसे पहली चीज तो ये बताया जाता है कि कुछ नहीं होता एग्जिस्टेंस, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवोटी किड की बात कर रहे हैं, जो टेंपल भी आ रहा है प्लस वो अपना बाहर एजुकेशन ले रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, राइट? होता क्या है कि अब वो टेंपल में आता है. टेंपल में आता है, क्या करता है वो? ही हियर्स ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान की कथा सुनता है. अभी आने वाला है बहुत सारे, मतलब जैसे सीता नवमी है जो कि आज से चालू हो गया है. सीता जी के पास्ट टाइम्स हो गए. देन यू नो यू हैव नरसिम्हा चतुर्दशी फ्यू डेज. तो अलग अलग इनकार्नेशन के पास्ट टाइम्स सुनता हूं. मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा देव, यू नो. तो इन सब में क्या बताया जाता है? हाउ डिड द क्रिएशन स्टार्ट? आप लोगों में से किसी ने थोड़ा पढ़ा होगा तो श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से श्री दक्षाय विष्णु के लोटस नेवल से ब्रह्मा जी एक कमल में निकलते हैं. ही अपीयर्स. कोई बिलीव करेगा क्या कि नाभि से निकल रहे हैं क्रिएटर यूनिवर्स? एंड देन आफ्टर ही वो तपस्या करते हैं 100 years. फिर भगवान उनको एक बार रेवलेशन करते हैं, उनको तपा बोल करके तपस्या करते हैं. फिर उसके बाद ही स्टार्ट क्रिएटिंग. तो क्रिएशन तब बिगिन करते हैं, राइट? और क्रिएशन कैसे होता है? कार्नो सागर क्या है? व्हाट द वाटर ऑफ डेवास्टेशंस, हाउ व्हाट these planets are floating actually in water. तो मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी टेक्निकलिटीज है. तो सुनेगा, उसको अच्छा लगेगा, बट do you think that he'll be able to take it up? For him, like he is living in two different existence. उसको एक चीज को स्विच ऑफ करना पड़ेगा तभी एक चीज स्विच ऑन होगा. समझ रहे हैं? So इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ना, इसी कंटेक्स्ट में सदापुत्र प्रभु हैं, like disciple of Srila Prabhupada. He was given an example of the nuclear physicist, Indian nuclear physicist. So who's a Hindu also. So as a Hindu he goes to temple. So when he is a Hindu, he is a Hindu. But when he is a nuclear physicist, he is a man of science. Like he preaches whatever science is. It's very difficult, right? In today's age. तो ये मतलब एक छोटा सा मतलब शॉर्ट है कि हम लोग क्या देख रहे हैं. अब आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ने फिर ये श्लोक क्यों लिया, अन्ना भवन्ति भूतानि, मतलब ग्रेन्स क्या, मतलब ग्रेन्स क्यों आया इसमें, ग्रेन्स क्यों आया, बॉडी क्यों आया, इसके ऊपर भी तो कुछ चर्चा होनी चाहिए. सो नाउ अगर आप देखेंगे आज के समय में, इवन इन इंडिया, यू नो देयर आर प्लेसेस अभी ग्रेन्स रिक्वायर्ड है हम लोगों को, बट आप देखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, सौराष्ट्र, तो बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है, राइट? सो क्यों हो रहा है? इवन व्हाइल कृष्णा वाज गोइंग फ्रॉम यू नो वन प्लेस टू यू नो दिल्ली, हस्तिनापुर, सो ही आल्सो सॉ मेनी प्लेसेस व्हिच वर ड्राइड ड्यूरिंग हिज टाइम आल्सो, राइट? सो अब इसका ब्लेम किसको जाता है? पहले जब कुछ भी दिक्कत होती थी, एवरीवन यूज्ड टू you know take it to the emperor or the government. The government used to be held responsible for everything. आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा. यदि किसी राष्ट्र में या फिर राज्य में किसी का पुत्र भी मर जाता है तो वो उसका ब्लेम देते थे किंग के ऊपर कि आपके कर्मों की वजह से मेरा बच्चा मरा, वरना वो मर नहीं सकता. ऐसा पास्ट टाइम्स भी है. They used to do like that also. So like let's say now today's government, you know, today's government is running on the propaganda, or their slogan is Hindu Rashtra. Hindu Rashtra, right? But if they call themselves Hindu Rashtra, so what should be they dependent on more, the scriptures or the modern science? Scriptures, right? That's the logical answer. लेकिन हम लोग डेवलप किस में ज्यादा, like on what we are kind of you know much more trusting, या faith किस पे है? Modern science. Right? We are calling or we are shouting development, 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 right? हम लोगों को development चाहिए. Development क्यों चाहिए? So that we can tackle all this problem. Vedic solution तो मतलब we don't want to do in everything. So in this particular age बोला गया संकीर्तन यज्ञ करिए आप, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं. Even our movement, ये जो आप देख रहे हैं ना हमारा ISKCON का movement, it all started with just this one thing. Prabhupada went to Tompkins Square Park. He never held lectures. Just one thing that he did was sit and chant Hare Krishna Mahamantra beating on a small drum, hand drum. आप लोगों को वीडियो दिख जाएगा अभी भी. That is how he started, you know.
बट हमारा गवर्नमेंट कैसा है? आर गवर्नमेंट स्लोगन वाज, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, जय श्री राम, राइट? दैट वाज द स्लोगन. राइट नाउ इट इज मोर अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेट. आप लोग को एक मैं रिसेंट बताता हूँ. सो देयर वाज दिस expo in Gujarat wherein president of America was called on, right? उनको बुलाया गया था दिखाने के लिए. उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स डेवलप किए, कुछ किए हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ, जो कि कंपैरेटिवली यूएस से बहुत छोटी है. यूएस में उससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. तो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे उनको बुलाया दिखाने के लिए मात्र कि देखिए हमारी भी कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट. लेकिन डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस? डेवलपमेंट इन स्लॉटरिंग पीपल. Development in slaughtering people. They say that they are providing facilities. Let's say कि भी इतनी सारी चीजें बनानी है आपको, राइट? इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने, स्टेडियम्स बनाने, सब बनाने, तो आपको क्या लगेगी? एटलीस्ट लेबर लगेंगे, हाँ? You will require big big factories to manufacture the components or commodities that you need, right? But फिर वो लोग आएंगे कहाँ से? ये तो हमारे जैसे शूद्र हैं, शूद्र भी उस समय पे भी उन लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे कि उनको क्या असिस्ट करना है, कैसे करना है, किस पे डिपेंडेंट रहना है, वो पता रहता था. लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो म्लेच्छ लेवल से भी नीचे हम लोग, शूद्र भी नहीं बोल सकते अपना, हम तो वर्णाश्रम से ही बाहर हैं. यदि कोई बोलता है, शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में शूद्र हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि शूद्र भी नहीं, म्लेच्छ और यवन है हम लोग, उससे भी नीचे, आउट ऑफ द फोर वर्णाश्रम सिस्टम. तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी, लोगों को वैसे एजुकेट करना पड़ेगा, मॉडर्न एजुकेशन से एजुकेट करना पड़ेगा, तभी वो सर्टिफाइड होंगे टू बिकम यू नो लेबर or in particular get a post in these so-called big factories. And again the same cycle, that tabernacle, this material tabernacle starts. ये बोला गया है. प्रभुपाद मतलब इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं. क्यों इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद बोलते हैं कि like we have got this human form of life to question that why am I suffering? Why I am suffering from four things. What is birth, death, old age and disease. Why are we suffering from these things? We have got this platform to get the answer of that, just to get it answered कि हम suffer क्यों कर रहे हैं. And this is the only position where we can question. Okay, now there are still 10 minutes. I'll just make a last point. Like this is something big and something important. इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे. This is like something I got like after searching out for a bit. और ये आप लोगों का थोड़ा, if you hear it like in a proper manner, it will force you into thinking. Okay, so modern culture, you take this modern culture, the principle it is based upon is controlling and enjoying. Two things. Modern culture is based on controlling and enjoying, right? As long as that can go on, they don't care how you do it, right? If controlling and enjoying is going on, no one cares like how everything is functioning. Otherwise, the things which were once considered bad years back are considered good today. Here, like we can take an example of various medication drugs, right? So there was this drug, COVID आया था बीच में. So there was this drug hydrochloroquine, which used to be administered to people who were having, in foreign practically they used to administer the drugs to person who are having malaria or dengue or some infection, but that drug was supposedly working upon the COVID patients also, right? So first of all they said it's not applicable, then they made it applicable, then later on in order to boost this vaccine, which actually was a lab product just to test whether it's working or not, they banned hydrochloroquine, right? So one example, right? So now these are banned. The main thing is that if it is enjoyable, then it may be bona fide thing. That is what they think. कि उसका applicability छोड़ दो आप. अगर वो enjoyable है तो मतलब क्या bona fide है. You want to take example? You take various examples of drugs which are administered to the people at rave parties. At the so-called sunburn या फिर ये सारी parties होती हैं यहाँ पे गोवास में and everything. When they take drugs, LSD होता है, they inject also some drugs to which they say that they get high, but actually when that high goes down, they go to the lowest than the low, जहाँ पहले थे उससे भी नीचे चले जाते हैं. So that particular thing, okay? So because that's the platform, but everybody does it in a different way.
someone is into sports. अब ये ऐसा नहीं है कि this is just limited to drugs or something like that. Controlling and enjoying tendencies कितनी subtle है. We discussed about subtlety, right? कि हम लोग breathe कर रहे हैं and like how mind के level पे और subtle होता है. अब कोई ये सोचेगा चलो मैं तो इन एक्टिविटीज में नहीं, तो अभी इसमें मेंशन क्या हो रहा है, वेरियस एक्टिविटीज मेंशन हो रही है जहां पे एक्चुअल में आप लोगों का कंट्रोलिंग as well as enjoying tendency दिखेगा. इसको आप लोग ध्यान से सुनिए. You know, someone is into sports, you know, someone is into study, someone is into making money, someone's into spending money, and someone is into sense gratification. Just basic examples. कोई सोच रहा है कि मैं पढ़ लिख रहा हूँ तो भी मैं कहाँ पे कुछ तो गलत नहीं कर रहा, मैं पढ़ना लिखना तो right, like it's good, but it is again what it is controlling tendency and enjoying tendency, because you think that I'll be able to only enjoy if I control the results, like whatever I'm studying, you know, if I get good marks, I want this marks, that marks, then I'll be able to enjoy on a certain level. Okay, so now whatever the way of enjoying is, you know, it is all right. You want to control through money, power, charisma, through whatever, it doesn't matter, it is all bona fide. As long as there is control and enjoying, then it is fine. That's the bottom line. And in the civilized society, then more sophisticated. अब ये तो हम लोग जनरल टर्म में बात कर रहे थे, बट अब हम लोग अपने सोसाइटी में आते हैं ना, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये और कॉम्प्लेक्स होता है. सोफिस्टिकेटेड मींस इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. मोर कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है आप ये देखिए. As long as your control, ठीक है, let's consider two parts. You are one part, I am one part. So this conversation is going on between us. Okay, so as long as your control, okay, doesn't bother my control, right, and your enjoying doesn't bother my enjoying, you know, then it is okay, right? But if your enjoying and control bothers mine, then that's not good. Okay, right? तो एग्जांपल से आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा. घर में कभी छोटे भाई बहन परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग गुस्से में कभी कहा बोलते हैं देखो जो करना है कर, बस मेरे को परेशान मत कर. बोला होगा ना आप लोगों में से बहुत लोगों ने, दोस्तों में भी हम लोग यूज करते हैं. तो इतने सेटल लेवल पे हम लोग ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड हैं, बट वी डू नॉट नो लाइक ये एंजॉयिंग एंड कंट्रोलिंग टेंडेंसी क्यों डीप है. So these purports by Srila Prabhupada, these shlokas from Bhagavad Gita are meant, you know, to actually give us a shock and wake us up. क्यों लाइफ में ये पढ़ना जरूरी है? Why, you know, studying these things? Why Gurukula education? हम लोग चलो अच्छा है ना यार, हिंदू जय श्री राम चिल्ला दिया, 2-4 नारे लगा दिए, डीजे लग जाते हैं हनुमान जयंती पे, जब भी रहता है वेरियस फंक्शन, डीजे पे डांस कर लेते हैं भगवा पहन के. बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र, हम लोग हिंदू आ रही हैं. But when you study Bhagavad Gita scrutinizingly, you know, hear lectures of, you know, Prabhupada disciples, and then contemplate upon it, and later on after contemplation try to make a change in your lifestyle. That is what will, you know, kind of benefit you all more. So thank you all for hearing. Any one of you having any questions from like online as well as offline? You still have 5 minutes. I mean, we ended 10 minutes early, so 5 minutes we'll be taking the questions. And personally also you all can ask. I'll be there till 9 o'clock. Those who are present offline, online people, please, it's better if you'll ask now only. If I'm able to answer something related to this particular discussion itself, it will be better. Hare Krishna.